वेलकम बैक टू माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को स्वागत है टेक सिविल लर्निंग में। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट द बेल आइकन्स। एंड लेट्स टुडे टॉक अबाउट द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वेरी relevant to the practical life. We must have, as a civil engineers, we must know all these things practically so that we will be good engineer in the future and we can design any safe structures easily. Until and unless if you don't know all these things, we can't design a safe structure. So let's talk about the balanced, under reinforcement and over reinforcement sections. So my dear friends, if you have not watched the previous video, please go through that video so that you can understand clearly. So if you follow the continuously of my lectures, you will understand the concept of D.D.R.C.S in the clear cut manner. So let's start. Balanced sections. So let's understand these sections as simple as the possible way manner. So friend, बैलेंस सेक्शंस कुछ नहीं, एक ऐसा सेक्शन जिसमें जो स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन मीन्स स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील both approach the permeable value at the same time, right? Let me tell you a sections. This is a type of sections in which the compressive stress of concrete and the tensile stress of steel approaches permeable value at the same times. This is nothing but the balanced section. अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो चलिए एक प्रैक्टिकल देखते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लेते हैं, लेट्स इमेजिन अ रेक्टेंगुलर बीम। एक रेक्टेंगुलर बीम लेते हैं, ओके। दिस इज अ रेक्टेंगुलर बीम एंड लेट्स न्यूट्रल एक्सिस is nothing but the axis where the stress value is 0. Here the stress value is 0. Suppose, as we know, the concrete is very weak in tensile stress, at the same times it is good in compressive stress. So in the tensile zone we must have to insert a steel bar to increase the load capacity or to increase or to design the safe structure. So let's insert. So this one is a tensile zone and I have already explained you why this is a tensile zone, because when a load is acting on the beam, a beam always resists of bending, right? So beam bends. When the beam bends like this, when the beam bends in this form, then here the means decrease in shape and size, that is nothing but the compressive stress. So the topmost fiber is having the more compressive stress, at the bottommost fiber having the more tensile stress. So the concrete is weak in tensile stress, we will insert a steel bar. So this one is a steel bar, right? I have inserted. So let us imagine the permissible load here acting is nothing, means let us imagine 70 kilonewtons. Here at the same times the permissible load acting in the tensile zone is also 70, means both are same. If the both stress value 70 kilonewton per meter or mm, if the both stress approach the means permissible value is nothing but the balance section. और आप लोगों को पता है परमिसिबल वैल्यू और परमिसिबल मतलब जो होता है वो क्या, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और द अल्टीमेट स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो इन द बैलेंस सेक्शंस द न्यूट्रल एक्सिस एंड द क्रिटिकल एक्सिस लाई इन द same plane or in the same axis, right? The both having the same axis. Let's see here, my dear friends. आप लोग से यही मीन्स रिक्वेस्ट है कि समझ के पढ़िए, मीन्स आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑफ यू टू प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. डोंट मेमोराइज और डोंट रिमेंबर द थिंग्स, एनी थिंग्स एट ऑल. जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एज वी आर अ बैचलर और बीटेक स्टूडेंट्स. सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. सो here this one is considered the figure up to here, right? This one here, this one is the nothing but the maximum compressive stress in concrete, and this one is maximum compressive stress in steel. Here this one is nothing but the critical neutral axis, and
the actual neutral axis lie in the same plane, and C is nothing but the depth of neutral axis. Depth of neutral axis is nothing but the depth from the topmost fiber. Topmost fiber is subjected to compressive in this. So we can say that in the balance sections जो कंप्रेसिव, जो स्टील का कंप्रेसिव स्ट्रेस और बार का जो मैक्सिमम टेंजाइल स्ट्रेस होता है, बोथ अप्रोच परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। Here you can see from the definitions, as I have told you that you can write your definition in your own way once you understand the concept. Here the most important things is you must have to understand the concept in the clear manners. So all the times I am telling all the students, right, means follow the concept, understand the concept, go deep to the concept so that you can understand everything very clearly. So all of you follow the channel. So here the maximum strain in concrete given by the designer is 0.0035. So I have told you that the stress in both concrete and steel is same, right, means maximum. So its corresponding stress is also same and corresponding strain is also same. The maximum strain in concrete is, if someone asks you what is the maximum strain in the concrete, you must have to say 0.0035. you must have to memorize all these things as it is given by the designer. So and it's the corresponding strain in steel is given by d minus xu by xu into 0.0035. xu is nothing but the depth of neutral axis. Depth of neutral axis is nothing but the depth from the topmost fibers is the depth of neutral axis. Here the notation depends upon on you. xu can be also written as in the sum of the textbook, and so there is no problem, notation depends upon you. So उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू put a comment in the comment section so that I can clear your doubt once you put the comments. So let's see the another type of section. Here now, before we see the another type of section, let's talk about the moment of resistance. My dear friend, let's take about the some practical example. Suppose just imagine take a bar, means आप एक सरिया हाथ में ले लीजिए and try to bend it, right, means try to bend that steel bars. You can't bend it because the moment of resistance of that steel is high. Higher the moment of resistance, if the any material of having the higher moment of resistance, it is very difficult to bend. So the moment of resistance of this type of section is given as q into b into d square, where q is nothing but the moment of resistance constant. It is given by half of k into j into means stress in concrete, and I have already introduced k, means these are the design constant. If you have not watched the design concept, I will put that link in the in the description box so that you can understand what are the design concept and elastic theory, which one is very very important. So watch the previous video so that you can understand the concept. Just understand the concept is very, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी इजी. मैं ऑल टाइम आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि कंसेप्ट को समझिए, समझ के पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ को मीन्स इंटरेस्टिंग तरीक़ा से बना के पढ़िए, आपको मज़ा आ जाएगा. चलिए बात करते हैं. और जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, विल डिराइव फॉर्मूला इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स इन अ क्लियरली मैनर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड this moment of resistance clearly. Just here is need to take a gander look on the moment of resistance. So let's see my friends. Next talk about the under reinforcement sections. Well, this one is very interesting. चलिए आप इसको इस तरीक़ा से समझ लीजिए. Again let's see the example. Let's means a type of section in which the percentage of steel is less. क्या होता है, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें स्टील का परसेंटेज क्या होता है, कम होता है, इसमें सरिया कम होता है, ठीक है. एक ऐसा सेक्शन है. तो चलिए इसको भी थोड़ा एग्जांपल थ्रू से समझते हैं, ठीक है. मान लीजिए आपके सपोज रेक्टेंगुलर बीम, राइट, सेम a neutral axis is passing, right. Here the percentage of steel is less compared to what, compared to balance section. So when the percentage of steel is less, then what happen, the actual neutral axis, right, the actual neutral axis will
shift upward. This one shift upward, right? As you see here in the figure, see what happened here. This one is critical neutral axis and this one is actual neutral axis. So in the under reinforcement section, the percentage of steel is less than provided in the balance section. So the actual neutral axis shift upward, as you can see in the figure. So what happens in this type of sections, the steel, the stress in steel first approaches its permissible value. ध्यान से सुनिए, इस टाइप ऑफ सेक्शन में क्या होता है कि जो स्ट्रेस का परमिसिबल वैल्यू होता है वो पहला अप्रोच होता है कंपेयर टू व्हाट, कंक्रीट. यस, वेरी गुड, कंपेयर टू कंक्रीट. सो दैट वी कैन से दैट द स्टील इज फुल्ली स्ट्रेस्ड, राइट. इस टाइप का सेक्शन में कभी भी फेल कहाँ से होगा, नीचे से होगा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील कम है, ठीक है. कभी भी फेल कहाँ से होगा, टेंसाइल जोन से ही होगा. कीप इन माइंड दैट द फेल्यूर टेक्स प्लेस इन द अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शंस फ्रॉम द वेयर, इन द टेंसाइल जोन, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस. सो in this type of sections what happen, the concrete is not fully utilize its strength. क्या होता है कि इस जो कंक्रीट का जो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ झेलने का कैपेसिटी होता है इसमें पूरा तरीका से इस्तेमाल ही नहीं होता है भाई. देन दिस टाइप ऑफ सेक्शंस इज कॉल्ड अंडर रिइंफोर्समेंट सेक्शंस. सो लेट्स सी सम ऑफ इट्स फीचर्स so that you can understand, and I will clear it out. Here we can say that the normal depth is less than the critical depth. As you can see that this one is normal depth and this one is critical depth. Here see when this one is compressive stress of concrete and this one is maximum compressive stress. My dear friends, see this one here this one is maximum compressive stress. The maximum compressive strength cannot be utilized. Here it is passing through the critical neutral axis. So the maximum compressive stress is not applied here, right? It means it is not, it is less than the compressive stress in concrete is less than maximum compressive stress. You can see from here diagram clearly, but here the stress in the steel is fully stressed, fully utilized. So let's talk about the moment of resistance. I have already told you that in the previous upcoming lectures I will introduce you or I will derive a formula of the moment of resistance of the different sections so that you can understand clearly. Here the moment of resistance for the under reinforcement section is nothing but the Q dash into B into D square. Here B is the width of breadth, D is the depth of effective depth of what, beam, and B is the depth of beam and Q is the moment resistance constant. Here the Q value is given as, and I have already resolved that the design constant in the previous lecture. So अगर आप previous lecture नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, डिजाइन constant और इलास्टिक थ्योरी पे आपको मज़ा आ जाएगा, so that you can understand clearly. Let's talk about some of the features of important features. These are the important features of under reinforcement section. So let's talk about here, my dear friends. So what happened, as I have told you that percentage of steel is less in this type of section, hence the percentage of steel is less in the balance sections. The both are 70-70, but what happened in under reinforcement section, suppose imagine the compressive, this one compressive is 70, right, permissible value, but here the percentage of steel is less, so imagine this value will be 40. So this type of sections is not sufficient to withstand the tensile stress. So these sections will fail from the tensile zone only because the compressive has enough stress value to withstand the compressive load acting over it, but at the same time the steel is not having the sufficient capacity to withstand the external load or the, so these type of sections always fail from the
वेयर इन द टेंशन जोन ओनली। याद रहे अंडर रीइंफोर्समेंट सेक्शन का जो भी होता है फेल्यूर वो कहाँ से, अंडर टेंजाइल साइड से ही होता है, अंडर टेंजाइल सेक्शन से ही होता है, ठीक है। देन here the steel is fully stressed while the concrete is not. The means the concrete cannot approach its maximum compressive stress but the steel is fully stressed. Here the axis of neutral axis lies above the critical neutral means critical neutral axis. I have already told you because the percentage of steel is less in this type of design. ठीक है, समझ के पढ़िए। उम्मीद करता हूँ जो भी पॉइंट लिखा है आपको अच्छे तरीके से समझ में अभी तक आ गया होगा। कुछ भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में बोल देना। here the point to be noted is the percentage of steel is less, hence the section is economical because the cost of the steel is high compared to the concrete. So here the cost of the concrete is less than the steel but the usage of steel is less. So ultimately the usage of steel is less, then the usage means then the section must be economical, सस्ता हो जाएगा क्योंकि जो स्टील होता है वो काफ़ी महंगा होता है, ठीक है, कंक्रीट से। तो इसमें जो है स्टील का यूज़ वो कम हुआ है। जब भी स्टील का यूज़ कम हुआ है देन कोई भी डिज़ाइन इकोनॉमिकल हो जाएगा, राइट। हेंस द परसेंटेज ऑफ स्टील इज लेस, दैट्स व्हाई द डिज़ाइन और द सेक्शन इज टू बी कंसिडर्ड एज द इकोनॉमिकल टाइप ऑफ सेक्शन। चलिए बात करते हैं डक्टाइल फेल्यूर का। दोस्तों मैं आपको पहले बोला हूँ इस टाइप सेक्शन में कभी भी फेल होगा टेंजाइल जून से। द फेल्यूर ऑलवेज टेक्स फ्रॉम द टेंजाइल जून एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टील इन एंड द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन द टेंजाइल जून इज स्टील। सो स्टील फेल्यूर ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डक्टिलिटी मैनर, दैट इज ग्रेजुअली, it does not collapse suddenly, means before collapsing the structures so means a lots of warning, it is giving a lots of warning or it show various characteristics before collapsing so that you can understand clearly. So this type of section is perfect, means we can, ये क्या होता है, ये अंडर reinforcement section perfect होता है क्योंकि आपको फेल होने से पहले बता देगा कि भाई सेक्शन तुम्हारा फेल होने वाला है, आपको सस्ता भी हो गया, ठीक है, आपको मतलब हर क्राइटेरिया से अच्छा है, ठीक है, इसीलिए इसको फिट और यही मेथड जो होता है डिज़ाइन करने के लिए एडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओवर रीइंफोर्समेंट सेक्शन का। माय डियर फ्रेंड्स, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन इज क्वाइट अपोजिट ऑफ द what under reinforcement sections. In the under reinforcement section the presence of steel is what, less. Here the means the percentage of steel will be higher which is provided in the bilayer section, so that the percentage of steel is higher or greater than the actual neutral axis will shift downward. इसमें क्या हो जाएगा, जो मतलब जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो ग्रेटर हो जाएगा क्रिटिकल एक्सिस से। चलिए इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हर चीज़ को आप प्रैक्टिकली कनेक्ट करो। चलिए देखते हैं फिर से। मान लीजिए कि फिर से एक आप रेक्टेंगुलर बीम ले लो, ठीक है, क्योंकि बीम का ही बात कर रहे हैं। मान लीजिए ये एक न्यूट्रल एक्सिस हो गया एन ए, ठीक है, मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है। देन क्या होगा ना, द परसेंटेज ऑफ स्टील इन दिस सेक्शन इज हाई। मान लीजिए इसका कितना वैल्यू था, इसका कंप्रेसिव परमिसिबल स्ट्रेस का 70 किलो न्यूटन था, ठीक है, मान लीजिए 70 था। और तो इस हेयर द प्रेजेंस ऑफ स्टील इज व्हाट, मोर, सो इट्स कैपेसिटी, ऑफ कोर्स द कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी और द फेल्यूर प्रिवेंटिंग कैपेसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स इज व्हाट, more. So here suppose it is 80 kilonewtons. So as I have told you that the capacity of resisting or the capacity of load resisting is more in the tensile zone than that of the concrete zone. Here the compressive stress is less, means concrete cannot withstand the 70 kilonewtons, right, because here the value of withstanding is 80 kilonewton, means this type of sections cannot fail from the tensile zone. Remember
under reinforcement section fell from the tensile zone because the percentage of steel is less. But in over reinforcement sections, the failure always takes from the compressive side, that is from the concrete, and concrete always fell suddenly. क्या होता है, इसमें सरिया का जो क्वांटिटी और परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण इसका जो टेंजाइल रेसिस्टिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए कभी भी फेल होगा कहाँ से, कंप्रेसिव जोन से. कंप्रेसिव जोन में क्या है, कंक्रीट है. देन कंक्रीट ऑलवेज फेल्स, व्हाट, कंक्रीट ऑलवेज फेल्स suddenly, means before failure in the over reinforcement section it does not show any sign. So this type of section is very risk to designs as the structures may fail at any time. So be safe, सेफ रहिए बचने के लिए. सो इसीलिए मैंने बोला था कि जो अंडर reinforcement सेक्शन है वो परफेक्ट है फॉर द डिजाइनिंग. So here the concrete is brittle in nature, hence it falls crashing suddenly. Now it is uneconomical. Why this section is uneconomical? Because the percentage of providing steel is more, and the cost of steel is more compared to that of the concrete. Hence it is uneconomical, but it is also brittle in nature. So ultimately we can say that these sections, over reinforcement sections, it is not fit for the designing, or it is not fit for the uses of structures or designing of the structures. So the best type of sections to design is under reinforcement section. So let's see some of the its various features. Before seeing feature, let's see some of practical example as I have already explained you. दोस्तों चलिए देखिए आप इस डायग्राम में. Here the concrete, see this concrete, maximum compressive stress of concrete is, means what we call the maximum compressive stress of concrete is permissible, that the concrete approaches its maximum value, but here the steel cannot approach its maximum value. So here the failure always takes from the compressive zone. In the compressive zone the concrete fails, and the concrete fails suddenly. So you can see from these figures, and it will clear cut showing the figure, and this concept is very very essential. So दोस्तों फ्रेंड देखिए यहाँ पे भी देख सकते हैं. Here various, the concrete is fully stressed while steel is not. It is quite opposite of that. Under reinforcement sections the actual neutral axis is below that the critical neutral axis, percentage of steel is more, hence this section is uneconomical, right, and the sudden failures. So आप सभी का धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा. सो कभी भी अगर आपको कोई बोले कि व्हिच इज द बेस्ट सेक्शन फॉर द डिजाइन, देन दैट इज अंडर reinforcement sections. Why? Because of the main two reasons. It always fails ductility failure, and one is economicals. So the failure in the under reinforcement section always show a various sign before the collapsing, and it warning the means designers before failure. So always prefer the under reinforcement section for the designing. और आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, or follow the tech civil learning so that you can understand the clearly. Bye bye, take care, stay happy, see you soon in next lecture.